चलें जी, ठीक हो गया. So we are live. Welcome to the PMO course. We have covered so many aspects which are very important with in connection to this PMO course, and I am sure about it. The way you are responding to it, जैसे आपने quiz attempt कल का भी किया था, इसके अलावा भी जो आप अपने assignments कर रहे हैं, I am very happy and satisfied that inshallah you all would be able to proceed it further with all success. Even the high level certifications you would be able to take up. So हमने इसको recap कर लिया था. I am just going to quickly skim through and not going to read much out of it. We know the benefits and objectives as well. We have clarity of the types of PMO, and I hope आप इसको relate करते रहते हैं. You have got all the material available in your knowledge hub as well. Go into it, keep on relating, and then and be prepared. Surprised assignment will be given to you, but don't worry. That assignment is going to give you length of 10 days around or a week's time to complete. So, but be prepared. I'm just gonna give you one assignment over the weekend, which you have to complete within the timeline. और एक हफ्ते का टाइम होगा उसमें. ऐसा नहीं होगा कि आपको वीकेंड पे मिला एंड देन यू हैव टू do it on the coming up class on Thursday or Friday. So, khair. Now moving forward with the success factors, the challenges we spoke about, then we spoke about the monitoring and reporting tools, which are very, very important, relating them, because obviously once you have to generate a project report or you have to monitor it, the tools are required to do that. It is absolutely just like that, that once you want to write down something, you need to have a pen and a paper to write something, note it down somewhere. So this is how things work. Now, moving forward with reporting tools accuracy, we are looking at different dashboards which help you make decisions quickly. Why the dashboards help you make decisions quickly is going to be the discussion question for today. And this question, I'm writing it here. And Anika and Sundar Spita, you will be giving this in the Slack as well. Why the dashboards help quick decision making. This you do not have to answer now. After I am done with the discussion, then inshallah you will be writing it down, as well as you will be attempting this question in your Slack, and you can take help from Knowledge Hub. Knowledge Hub has got a sequenced link which has got different further down the lane links which you can always explore and find out, because I keep on updating those links from different platforms which are helpful for you to look into it, right? So interrupt dashboards for, yes, interpret these dashboard, and there is least interruption while you are working on the dashboards, because if every time there is a human interface utilized in somehow other projects or other ways, so that actually invests more of the time. But yes, it's okay that if you have these, you can say, weekly meetings one on one, or quarterly meetings, which are important to have a direct connect with people who are working on it, but the daily basis connect, even at times your dashboard is updated twice or thrice in a day's time, and then that ensures the quality and timely submissions as well. So now looking at the other perspective, monitoring tools are important because it improves transparency, accountability, and we had a long discussion on accountability as well, where you asked me what accountability actually is. So accountability means that you have got a responsibility to do something, you own it. That is ownership and responsibility which comes in. So those of you will who are part of it will be also getting an opportunity to buy this course. Then reporting ecosystem. This is and to understand how data flows from sites to dashboards, like how the dashboards work. This is what we are actually looking at, and I'm going to take up Jira live today for your understanding, and you would be able to understand it as the task. Also, I remember that you would have completed, which was given to you in the last class. I'll just take the feedback and follow up on that how much it is done. Coming to the daily progress report. The daily progress report is interconnected with your Trello, Jira, or Slack, whichever the management, project management
update tool you are using, so as to have the basic clarity on these areas. Now there are few things which are the key fields in DPR. We are going to have a look at DPR at length today. The DPR is the daily progress report. Daily progress reports are taken in every place, like in our Expedia, as you know that there are different units underneath. So each has to prepare the DPR and has to present what the task they are doing. Why it helps? It is monitoring with in this aspect that it is not only just to keep the manager updated or keep you firm, not to check all the time on you, but this actually helps that you are taking help on the desired areas. And then there is a follow up by anybody, that can be HR, that can be the top management, so you are abreast and you are confidently responding to that query, right? So that's why the DPRs are important. The DPR has these fields in it: resource costing, attendance, activity summary, and productivity matrix. Productivity matrix is termed as, if you want to know the term which is used in HR, that is the KPIs, KRAs, and through that, the performance appraisals are done. So this is somehow the overall daily progress reports are meant for, and these are the key fields. Now, resource costing is not shown to you when HR maintains is. This is covered, that how much salary is being given, and there is a hidden cost behind each investment. Each investment means that when company hires one person, so they pay some, you can say the taxes, or you can say that some amount of money to the respective other institutes to have them, because that is a hidden cost. And in fact, you will be surprised to know that a person who is taking, let's suppose, 50,000 the PKR, so hidden cost behind that investment is around 90,000, or sometimes 95,000 or 100,000 behind it. There are other things which are involved, like the insurance maybe, or other facilities which are provided. It depends. There are different benefits with every organization, and that vary whichever the other benefits. This is I'm giving you in from the aspect of daily reports, other than you can say tangible projects which you can see the progress in front of you. This is from the aspect of HR, that's what how it is calculated. Attendance means that it's important in every project, whether it is related to your day-to-day work, that are you present, are you doing it firmly, the hours are invested or not, like they take out the hourly cost, that how much do you cost to them. Let's suppose if they are giving you a salary of 100,000 or 50,000. So how many per hour? So that average is calculated after having a calculation which is based on 30 days salary, which is paid to you, which is actually 26 days because you get weekends off. And then based on the same, how much is the per hour salary you are getting. So that's how the calculations work while we monitor the, that's have told you in advance, at advanced level, but basically these key fields are to be filled in DPR. You need not to give the reasonings. I have just informed and shared with you to explain and understand the costing behind the thing, and the attendance and activity summary and all. So I would suggest that you all can make your daily progress report for your own self, which you can share with us lately sometime. But yes, those who are working and those who are not working, they can also create it. I would say that for the people who are not working, they can create this daily progress report to monitor their activities in a day's span. That how many effective hours are you contributing to your own self. Effective hours means that how much are you investing in learning, in getting to know some new thing, and getting acquainted. There are sometimes when you are associated with good project managers, they keep on assigning you some new things. They give you some tasks, and those tasks which you do, you learn a new thing, because they are there to help you actually. So this is the practical scenario. Once you are associated with a project, you were new,
Then you start working on it, you became a part of that project. Then simultaneously, when you will be getting tasks in the beginning, I can tell you that this is going to be a tougher thing. That is tough, which you have to do. It's a tough thing and in the beginning, because it's a new thing that, oh my God, this task, how will I do it? How will I adjust the thing? I'm not getting actually that. How should I feel? I'll give you a very good example. Recent past, I'm saying, in terms of that, before joining this organization where I was working, it was a big setup. But I'm just trying to tell you that the report I got from one intern was that I am unable to understand what tasks are allocated, and she had around 2 months of in the towards the end of first month, I received that report from my HR manager, stating that, ma'am, this is the update from this person. So when I looked into it, and I found that the person who, that lady, she was an intern from and recently graduated from a university. She had around 8 months, 6 months university work exposure also. So when I spoke to her, so I said that what happened? So she said, I was afraid of asking questions from my manager because I felt that she might would be saying that why I'm asking, and she will be thinking that I don't know the thing. And I spoke to her and I said that, see, you have done a mistake over here only. You are new, so obviously you have to ask questions. There is no harm getting the knowledge from someone who has given you the task, or even if you can do something at your own, it's good. But in the beginning or in mid of the task, you can ask several time questions, and the person who has given you the task will never take it negatively. So this is something which is important from the project aspect. Also, that whenever you are given a task, you have to ensure that you keep on asking small little details, so that you can understand that what kind of a project is, what are the requirements, what you might would be knowing but you are not completing it, or might not be asking something relevant to that. So this is how the activities summary is to be generated every time when you are talking about the DPRs, right? And productivity metrics then work on that, that how much productivity out of that particular project has been attained or acquired, right? Got it? So these are the key fields in the DPR. How will you create it? You will create it in an Excel sheet by marking the first, row should be carrying a serial number, which is one, and that's resource costing. Let it be on one side. Then first mm, row will be first column, and row in the first column you can write down even the name, key DPR, my daily progress report, then serial number, and then in the first column resource costing, and besides that attendance, then activities, and then summary, and likewise. And even in one sheet you can have different tabs. It all depends on you, but you can create it in Excel. And that I can also give you a one created one which you can use. So this is how the key fields of then the good best practices of daily progress report. Why we asked you to give daily progress reports, or why you can keep your daily progress report. I will would like to suggest one thing to you, or if you want to take it as a suggestion and advice, that is far more better. That all of you who have just started your task with the organization, as a job role of intern or trainee, or in the managerial position somewhere else, like people over the YouTube who are listening to us. Because what I can see is there that at present there are 50 participants who are listening to us, and they are working on the way we are suggesting them to. So based on that, to the YouTube listeners, I would suggest that connect with us and attend these live sessions. It is rare that a company of that you can get benefited through these also. So do connect with us, and then based on that, create your daily progress report, best practices, because it ensures accurate entries. There has to be whatever the days you have worked, let's suppose 3 days, 4 days, whatever the task you have taken in, or if it is awaited, you can go back to the manager and ask that, sir, please guide me on it. Ma'am, please tell me that how should I carry forward this. Submit it daily. That's important. Whether they get back to you or not, that's okay. But you should not forget this thing, that you are waiting for the manager to recall, because
to tell you very clearly that manager will not remind you, he will mark you. He is observing you basically, because that is the task of the manager as well. They'll remind you once or twice, but this is something which they will be observing. Rarely the managers are there who will remind, but the best practice of a good manager is that he has allocated the task and then he waits for the responses also. So now this is given to you. Now it's your task to get back to him or to keep the things ready by the time he asks you again that what you have done and what is yet pending. Or in advance, you can always create it, your daily thing. Cross check with field updates. Like field updates means that if there is something which is pending from somebody else, you are related to it and you just need to wait for the cross check. Now, fill out a sample DPR using provided data and calculate efficiency. I'm going to send this to you in the Slack, Anika Sundas. Beta, this question has to go in the Slack, and we will be providing them with one empty and one data, which they have to fill in the daily progress report. And besides that, we have to ensure, so this is you have to take up that you write down in the Slack that how many of them have got a DPR ready with them. You can give them 10 days time, and or within a week's time you can ask them if they are ready with their daily DPRs, have they created or not. And this activity, I would tell you that creating your own DPR is marked activity. This you have to do at your own within 10 days and it carries 10 marks. So this you have to ensure that you write down in the Slack the instructions that this is a marked activity. We will add these 10 marks in their exams for Sure, creating ma'am. their DPRs, creating their Trello or Jira, whichever the dashboard they want to create. These all are going to carry overall 10 marks for their final exam. So this is a must thing. ठीक Okay. है बेटा? Did Right, great. So this is which you will be doing now. Daily activity report tracks daily schedule versus actual progress. So do not forget that daily activity report is called DR as we see. Progress report is DPR. Now we are talking about daily activity report. It tracks daily schedules versus actual progress. Daily schedule means that today I had to attend the session, but somehow I got busy with something else and I could not. Let's suppose I can take example of Alishba, Michelle, or Adnan if he is there on the job also, or Josefa, but that is a scheduled thing that you have to attend the course. And the actual progress there is that you have attended or somehow you could not. In case if you could not, so that will show that you couldn't do the task which was there because of some reasons. There is going to be another column which will be filled by saying so, right? So it includes in-out tracking to measure efficiency, like at what time you added what and at what time you couldn't do something which was desired to be part of that, right? So these are a few things which are very important from that aspect. Now, use case. Use case means that validate on ground operations and workforce movement. A good example for the daily activity report is validate on ground operations and workforce movement. On ground operations, if there is some kind of a work going on in fields, over here, if I give you the example of a telecom industry, rigorous work on ground, they are doing some tasks. So that activities does fall into the operational areas, which is a field work. They are really going there, they are fixing things up, they are looking at the fixed network projects or either mobile network projects or something where they are physically doing something. So this is something the use cases is named as like use case, which is there in going on in action. Then we will be having this activity also, that missing data, but at the present, only one task is there, that is the DPR with you, which you will be finding in the Slack for you to complete that. So we will be moving to the second part of daily activity report in our next session. Then I'm keeping it here for now. So now is the time that we will be moving to Jira in practical, and the question which I have written in the chat, I'm giving you time for 5 minutes. Exactly, take 5 minutes and write these answers, and then we will be discussing, right? 5 minutes and reply to the question.
चले, quickly do it, take 5 minutes and then response, give me the response on it. And the same question you will be taking up in your Slack as well. So it's fine if you have, just if you joined a bit late or something like that, doesn't matter. But now, as of now, you can. Oh, very good, Michelle. Very good, girl. Excellent. Fastest response. Good. Shining star. Okay, I'm waiting for others. 5 minutes. I'm giving you a mute time from my side. Just complete it so that I can go one by one to your responses. Ma'am, we have answered that question. Okay, good. Ikra, have you written it? Oh, you are the first one. Another shining star. Wow, good. Excellent. I didn't look up into it. ठीक है, good girl. No, ma'am. Very good. मैनी The नो मैम, fourth? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले आंसर किया था, मैं लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, ओ मैंने ऊपर नहीं देखा ना। गुड गर्ल, नाइस नाइस। चलें ठीक है, बस 5 मिनट्स में नहीं जी, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। ओ इतने एक्चुअली सारे सारों ने कह सुपरस्टार हैं दिया। आज। ईसा ने भी सारों ने लिखा कह है। दिया। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। चलें ठीक है, नाउ रेज हैंड्स एंड लेट्स टेक द रिस्पॉन्सेज 5 minutes। चलें, लेट्स स्टार्ट। Who would like to answer? Oh, Hamna, you are here. Good. You have got a long life. I was just thinking yesterday only that where is this little girl is. So welcome back and stay back as well. Acha, now moving to Sundar. Sundar, kindly the raise hands are to be addressed. You can call them up and take their answers. ये जी जी हम ना अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum वालेकुम assalam. अस्सलाम। हाउ आर यू? Alhamdulillah, we are good. मैम एक्चुअली मेरे सेमेस्टर के फाइनल्स चल रहे थे, तो मैंने पिछली 3 क्लासेस नहीं ली, तो इस वजह से। ओह, तो बस मैंने ये इन तीनों क्लासेस की पेनल्टी पता है क्या होनी है कि 3 एक्स्ट्रा क्लासेस में आना पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। मैंने ऊपर आंसर कर दिया है, मैं अब हाँ, इसको पढ़ एक्सप्लेन देती कर, हूँ। यस यस, इसको एक्सप्लेन करें आप। ओके। सो डैशबोर्ड हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको एक प्लेस पे रख देता है। सो वी डोंट हैव टू सर्च थ्रू डिफरेंट फाइल्स। जो डेटा है वो प्रेजेंट हुआ होता है क्लियरली चार्ट्स के थ्रू और विजुअल्स के थ्रू, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है उसके ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने में। और इससे हमारा टाइम भी सेव होता है बिकॉज यू कैन सी रिजल्ट्स इंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ रीडिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। एंड ये जो डैशबोर्ड है ना, ये सिंपल कर देता है क्योंकि डाटा को कंपेयर करता है और क्विकली नोटिस करता है व्हाट इज इम्प्रूविंग एंड डिक्लाइनिंग। ओवरऑल दे हेल्प यू डिटेक्ट प्रॉब्लम फास्ट एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस more quickly. So this is all about that. Thank you so much. गुड गुड गुड, वेल आंसर्ड, फाइन। चलें जी, सुंदर कौन है नेक्स्ट? इकरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन हमें चार्ट की सूरत में सामने विजुअल फॉर्म में नज़र आ रही होती है, तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन में प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम उसे देख के फ़ौरन डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट हर बात क्लियरली वाज़िह शो हो रही होती है, डेटा हमें कंपाइल फॉर्म में मिलता है, तो हमें कोई भी चीज़ डिटेक्ट करने में या कोई भी चीज़ नोट आउट करने में आसानी नहीं हो मुश्किल नहीं होती, आसानी होती है। हाँ ठीक है, गुड। और क्या नाम है, डैशबोर्ड के अंदर तमाम चीज़ें हम टाइम टू टाइम साथ साथ अपडेट करते जाते हैं, तो कुछ भी ऐसे नहीं होती कि कोई पॉइंट हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ऐसा हो जो हमसे मिस आउट हो जाए। वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर साथ साथ हम सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाते हैं, तो इस तरह हमारी डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, हमारा टाइम बच जाता है। वो चीज़ें जो हम सोचने में लगाते हैं वो डेटा हमें सारा विजुअल फॉर्म में जब सामने मिल जाता है तो हमें हर काम में आसानी हो जाती है और हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। वेरी गुड, ठीक हो गया। चलें जी, एक्सेलेंट। चलें आप अलिशा। करते जाएं, मैं चलें, फाइन, दैट्स गुड। आप सुंदर सबसे पूछते जाएं, मैं फिर लास्ट में एक पूरा ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ सबका, मैं पॉइंट नोट्स करती हूँ तब। करें बेटा, स्टार्ट करें।
जी अलिशा मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। डैशबोर्ड एक ऐसी जगह है जहां आपको अपनी कंपनी, प्रोजेक्ट या टीम की सारी ज़रूरी मालूमात एक साथ मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको लंबी रिपोर्ट्स या अलग-अलग फ़ाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डैशबोर्ड में चार्ट्स, ग्राफ्स और इंडिकेटर्स होते हैं जो डेटा को समझने बहुत आसान बनाते हैं। एक नज़र में पता लग जाता है कि कौन-सा काम हो रहा है, कौन-सा टारगेट अचीव हो रहा है और कौन से काम हमारे डिले हो रहे हैं। तो हमें वो फ़ौरन समझ आ जाती है और हम उस काम को जो काम डिले हो रहा होता है उसको फ़ौरन हम कवर कर लेते हैं। डैशबोर्ड अक्सर रियल टाइम अपडेट होता है, मतलब जो भी चेंजेस या प्रोग्रेस हो रही होती है वो फौरन दिखाई देती है। इससे मैनेजर या टीम मेंबर वक्त पर फैसले ले सकते हैं कि अपना हम अपनी स्ट्रैटेजी हमारी कहाँ पे वीक पड़ी है, कहाँ पे हमें नई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। डैशबोर्ड सिर्फ डेटा दिखाने का टूल नहीं है, बल्कि ये इस एक तरह का गाइड भी होता है। हमें समझ आ जाती है, हमें मदद मिलती है कि कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे सिर्फ वक्त बचता है, बल्कि चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। मीन हम अपना काम अगर डैशबोर्ड पे ऑर्गेनाइज कर देंगे कि पहले ये करना है, फिर वो करना है, वो करना है। मीन एक तरह की टू डू लिस्ट होती है कि ये काम हमारा हो रहा है, ये काम हमने आज करना है। मीन जैसे हमारा ट्रेलो ही ले लें, ट्रेलो में जैसे टू डू होती है, एक डूइंग में होती है, एक डन होती है कि कौन सा काम हम कर रहे हैं, कौन सा पेंडिंग में है और कौन सा कर चुके हैं। वेल वेल डन अलिशा। जी मैं मुनासमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैशबोर्ड ये एक वे है डाटा को डिस्प्ले करने का, मीन्स विजुअल डाटा को हम एक प्लेस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, कि हम डाटा को जल्दी जो है वो समझ सकें। हमें एक इंटरफेस है जो कि हम इंफॉर्मेशन को एक जगह पे विजुअली शो करता है। डैशबोर्ड जो है वो स्पीड अप करते हैं डिसीजन मेकिंग बाय ब्रिंगिंग की इंफॉर्मेशन टुगेदर इन वन क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड वे। सो जो है हम रिपोर्ट्स या जो इन अलग हमें सर्च करने की बजाय हम एक ही जगह पे जो ट्रेंड्स हैं या उनको कंपेयर कर से एक ही जगह पे देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मैमूना, थैंक यू सो मच। जी फरहत। डैशबोर्ड एक डिजिटल स्क्रीन या इंटरफेस होता है जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह पर चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स की शक्ल में दिखाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप डाटा को जल्दी समझ सकें, परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकें और बेहतर डिसीजन ले सकें। डैशबोर्ड वही काम करता है जो एक गाड़ी का डैशबोर्ड करता है। गाड़ी की स्पीड, फ्यूल और सिग्नल्स एक ही जगह पर नजर आ रहे होते हैं। और बिजनेस या ऑफिस डैशबोर्ड भी इसी तरह कंपनी की परफॉर्मेंस, सेल्स, अटेंडेंस, प्रोडक्टिविटी, टारगेट्स, इश्यूज एक स्क्रीन पर दिखाते हैं। थैंक यू। वेल डन फरहत, बिल्कुल ठीक है। जी इज़ा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम डैशबोर्ड एक स्क्रीन की तरह होते हैं जो तमाम इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पे हमें दिखाते हैं, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह रिपोर्टिंग हो गई, अटेंडेंस हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह पे दिखाते हैं। ये इसमें चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। इस तरह हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, शाबाश इज़ा। जी मिशेल से आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। डैशबोर्ड इनमें सारी जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर होती है और वो विजुअल्स की फॉर्म में होती है, लाइक चार्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, तो उनके थ्रू जो है हम उसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सारी फाइल्स और रिपोर्ट एक ही जगह पर पड़ी होती हैं। सो हमें उसे डिफरेंट जगह पे जाकर अपलोड करने की और वहाँ जाकर उन्हें ढूंढ के फिर उसके बाद अपना काम करने की ज़रूरत नहीं होती। एक ही जगह पे क्लियर व्यू होता है, तो इसके थ्रू जो है वो हम डिसीजन मेकिंग फास्ट कर लेते हैं और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर बिकॉज हमें क्लियर व्यू में होती है, तो हमारे पास हमें बार बार अलग अलग रिपोर्ट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी से हम जो है उसे ओपन कर लेते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें कि लाइक अब फिज़िक्स सब्जेक्ट है, उसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूलाज चाहिए, लॉज चाहिए, तो वो तो अब अलग अलग पेजेस पे होंगे हर हर चैप्टर के। तो उसके लिए जो है वो सिंपल ये है कि हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिस चैप्टर के कर रहे हैं, उसमें जितने न्यूमेरिकल्स यूज़ हुए हैं उसी पेज पर लिख लें, ताकि उसी से जो है वो हमारे पास तमाम डाटा एक ही पेज पे मौजूद होगा, लॉज भी वहीं पे होंगे, तो वहीं से करके हम न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हैं। शाबाश मिशेल, थैंक यू सो मच। जी लारे बकर।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं स्टार्ट। यस, यू मे स्टार्ट। वैसे ये जो डैशबोर्ड एक ऐसा टूल होता है जहाँ पे हमें काम डेटा और परफॉर्मेंस और रिपोर्ट एक नज़र में देखने को मिल जाता है। इसमें अक्सर चार्ट टेबल और टूल्स ग्राफ वगैरह होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को आसान कर देता है कि सब एक जगह पे मिल जाते हैं। और इसका मकसद इससे ये होता है कि हम फैसले जल्दी कर सकते हैं, मतलब कोई भी डिसीजन होते हैं जल्दी ले सकते हैं और टाइम भी वेस्ट नहीं होता इससे। वैसे एक समरी और ये डेटा बोर्ड जो है ना एक समरी की तरह होता है, पूरी सिचुएशन को जल्दी से ओवरव्यू दे देता है। थैंक यू मैम। थैंक यू लारे। जी अमान एजाज। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम डैशबोर्ड जो होता है ना वो सबसे पहले हमारे पास एक इंटरेक्टिव टूल होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट डेटा उसके नंबर्स और की इंडिकेटर्स को ना एक स्क्रीन पर ना हमें समराइज़ करके हमें शो कराता है। इसका मकसद जो बेसिकली होता है वो यही होता है कि मैनेजर्स और जो टीम होती है ना उसको आसानी से परफॉर्मेंस वो ट्रैक कर सकें, ट्रेंड समझ सकें और तेज़ी से इंफॉर्मेशन जो है ना वो हासिल कर सकें। अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो ये बन जाती है कि जैसे हमारे पास बैंक ऐप का एक डैशबोर्ड हम देखते हैं जिस पे हमारे अकाउंट बैलेंस होते हैं, हमारी रीसेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं और बिल का रिकॉर्ड एक ही स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है ताकि ना हम अपने पैसे इजीली मैनेज कर सकें और ज़रूरी डिसीजन ले सकें। वेल डन, वेल डन अमानिया। थैंक जी यू मैम। आयशा बासित। अस्सलाम वालेकुम। डैशबोर्ड एक ऐसी स्क्रीन या सफ़ा होता है जिससे हम तमाम मालूमात ले सकते हैं, जैसे कि गाड़ी की डैशबोर्ड जिसमें हमें हर चीज़ नज़र आ जाती है, स्पीड, फ्यूल एंड इंडिकेटर्स वगैरह। और जो वक्त वक्त बचाने के लिए इस्तेमाल होता है डैशबोर्ड, और सारी मामलात एक जगह देखने के लिए, बेहतरीन फ़ैसले के लिए। और आम तौर पर हर चीज़ आसानी से समझ आ जाती है, डाटा जैसे क्लियर नज़र आ जाता है। और परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और और मतलब कि हर काम आसानी से हम कर सकते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है आयशा बासित। हाँ। चलें जी, ऑल आर डन। और नबीला, अच्छा नबीला बता लें, पहले बता लें। नबीला आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर क्या करें सुंदर? अभी आ मेरा रही? ख्याल है हाँ अब आ रही है, बताइए। नहीं, अब तो आई थिंक ड्रॉप हो गया इनका। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। इफ शी हैज गॉट अ ड्रॉप, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, वेरी गुड, वेल डन। हाँ नबीला बताना है। नबीला आपकी आवाज नहीं आ रही। वहां पर पता नहीं क्या हो जाता है। हम्म पता नहीं क्या वजह है। अ, चलें फिर, लेट इट बी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में। अभी फौरन फिर इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है। ठीक हो गया, वेरी नाइस, वेरी वेल अंडरस्टूड। और आपको इंशाल्लाह इसका असाइनमेंट जो है ना रेलिवेंट वो मैं बताती हूँ। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था जब आपने ये एक एग्जांपल इसकी कोट की है ना, कि इट इज जस्ट लाइक गाड़ी का डैशबोर्ड एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी नाइस। फरत, ये आपका एग्जांपल था, राइट? तो ये अच्छी एग्जांपल आपने इसकी रखी है, दैट्स अ गुड थिंग। तो एंड लाइकवाइज यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये आप लोगों ने अपने असाइनमेंट की तरह से इसको लेना है। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपकी खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो चलें बस वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन। आपको एक असाइनमेंट मैं उस पर फॉरवर्ड करूंगी, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का मिल जाएगा। सेकेंडली आपको इसके
नॉलेज हब जो है उसको काइंडली फॉलो करते रहा करें, लिंक्स को फॉलो किया करें, जो अपडेट्स आ रहे होते हैं काफ़ी यूजफुल मटेरियल है उस तमाम पूरे सेक्शन के अंदर। तो आई वुड बी हैप्पी दैट इफ यू ऑल आर होलिस्टिकली फॉलोइंग दैट, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव पे। अच्छा, तो इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो आपकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ साथ जो आपकी डेली इसकी रिपोर्ट होती है, एक्टिविटी रिपोर्ट, उसको भी लेके जाएंगे। ट्रेलो मैंने इस वजह से और जीरा का आपके लिए छोड़ा है टास्क आपके, मैं उसमें चेक करती हूँ आज दोबारा से कि कितनी प्रोग्रेस, कितने आ गए। लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक में दे दें, जिनका डन हो वो डन कर देंगे और आप रिस्पॉन्ड कर देंगे उसको। मैं एक शीट आपसे शेयर करती हूँ, उसके अंदर भी, अभी नहीं, आफ्टर दिस सेशन ओवर द वीकेंड। ठीक है जी, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड इंशाल्लाह, एंड गेट द मैक्स आउट ऑफ इट, हैप्पीली स्पेंड इट विद योर फैमिलीज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।